So right now I'm using the three, basically the size. So there are small screws here. So I need to remove the jack from the top on the jack. But be careful about all the jacks here. Just because of that, this jack belongs to the Face ID and this jack belongs to the old LCD. But always be careful to save both of them. The Face ID, this one is much important. So right now I'm just to removing the metal plates from the battery and the LCD first. Just because of that, before doing anything in the damaging phone, you always to remove the battery jack first. Otherwise the spark or something can be happen in the phone. So the same metal plates with the same screws. Okay, so another thing, you can always use your nails. Right now I have some small nails, so I will try first with the nails to remove the battery. Yeah, it's done. So next you can do to remove the LCD jack. It's also done with the nails, this finger. Now I'm going to remove the Face ID plates and the screws. Same screwdrivers, always keep placed to the screw right here with this finger. Like here, because these screws are in front of them, so that's why I'm going to place here. Sorry, this screw is on the top, so I'm going to place here on the top, and the last one is a 4 basically, so I have to use 4 one. So this one is a 4 dimension. But be careful, don't touch the camera, anything here. So like you can use screwdriver like that. Firstly, put on the screw. When you think it's fixed, then move the screwdriver. Sorry. Be careful. Okay, so now I'm going to remove with this one. There you go, it's done. Be politely. So now I'll have the screw, this one. So this one will be here. Okay, so today I'm just going to change the LCD only, not the back, because the customer is not agree, he has no money to changing the back. So I'm just changing the LCD first. So just keep this one be on the safe place. Now I'm going to remove the Face ID. So firstly remove the screws. So I need the 3-dimensional screw. Be slow and always put the finger on it, because if you lose the screw, so you have some loose jacks. This one, there you go. So same screws with the same metal plates. So right now it's a little bit tight, so I have to heat up this
Face ID first, then I will use this rubber play, like the sticky thing. So here you go. I'm gonna heat up this one. So I have the heat up machines. Here you can see I'm just checking the pressures and the heat temperature with my hand. If it is okay, then we can heat up the Face ID, but not too much. If you heat up too much, you can damage the Face ID. Okay, be careful like that, not at the same position. Always keep change the positions को भी चेंज करते रहना है मेरे पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली फ्रेंड्स, श्रीलंकन. ओके, लाइक दैट. आप चेक भी कर सकते हैं. यस, डन. ओके, so now I'm going to put this rubber plates on the bottom like that. So slowly 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 slowly. There you go. Slowly, slowly. Okay. So be careful. So if you want to remove this one, so just press from here. Then you can do with your finger. Slowly, slowly. Not like that. Don't pull it. Slowly, slowly. Just pick with these two fingers. Okay. Slowly, slowly. Because I want to save the Face ID. It's always programmed with the phones, with the Apple iCloud. So that's why I just want to save the Face ID. Okay, so here you go. I have to remove these sticky things, so I just want to use this one. Okay, so now be careful from here, like that. Here you go. Calm down, slow, be patient. Okay, so I saved the Face ID. Now I'm gonna to put on the new LCD 13 Pro Max. So I have the aftermarket LCD 13 Pro Max. So here we have two types, soft and the aftermarket. Soft is a more better, and some people have no money, so they always prefer the aftermarket screen. It's a little bit cheaper than other quality, but it's good. Still, it's good. So that's a new LCD. Be polite. Just press from the bottom like that. Okay, here you go. That's a new LCD. I'm just going to remove this one because I don't need it.
remove the plastic, this one, there you go. And now I'm gonna to compare this one with this one, same thing, everything. And this jack is little bit like the curved. ये जैक जो है थोड़ा सा कर्व्ड है, हम इसको थोड़ा सा कर्व कर लेते हैं. So now I'm going to put the face ID. अब मैं face ID इस पे लगाने जा रहा हूँ. Same position पे लगानी है. Always on the same positions. Like that. It's already sticky. So I'm just pressing slowly. Okay. It's done. अब ये है कि इसके ऊपर हमने इसी का जैक लगा देना, ये वाला. ओके, सेम स्क्रू. ये जो स्क्रू है वो 4 मुंह वाला है. 4 मुंह वाला आपने लगाना है, पकड़ना है. ओके, मेरा ख्याल है ये 4 मुंह वाला नहीं है, ये 3 मुंह वाला है. 3 डायमेंशन में है. ओके, सो अब ये मैं इसके ऊपर लगा दूंगा स्क्रूज ड्राइवर के साथ. ओके, एक स्क्रू मुझे लगता है कि वो शायद अंदर ही गिर गया है. हम इसमें से चेक करते हैं कि शायद यहाँ पर हमें वो स्क्रू मिल जाए. हाँ जी, ये आप देखें, बड़ी ही डेंजर जगह पर गिरा है, बैटरी के पास. तो ये स्क्रू हमें मिल गया. ओके, जब भी आप एलसीडी चेंज करें तो हमेशा जो नीचे फ्रेम है, हाउसिंग है, इर्द गिर्द पहले हमेशा स्क्रू चेक कर लिया करें, क्योंकि वो स्क्रू दोबारा डैमेज कर देता है आपकी एलसीडी को. Here you go. ये हमारी फेस आईडी भी लग गई. डन. थोड़ा सा इसको चिपका भी दें. लें जनाब, अब हम पुट करने जा रहे हैं अपने फ़ोन के ऊपर. हमेशा आपने ये वाली फिंगर यूज़ करनी है, दरमियानी फिंगर, इन जैक को प्रेस करने. लेकिन ज़्यादा प्रेस नहीं करना हमेशा आपने, क्योंकि नीचे उसके जैक छोटे पिनें होती हैं, वो टूट सकती हैं. जहाँ पर आपका हाथ बताएगा, हाथ से सेंस करना है अपनी 6 सेंस के साथ, तो ये आपको बता देगा कि ये फिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा. बड़े प्यार से जैक को पकड़ना आपने, और उसके बाद आपने इसको बड़ी मोहब्बत से लगा देना. साथ थोड़ा थोड़ा देखना भी है कि उसके ऊपर फिट आ रहा है कि नहीं आ रहा. थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि लग जाए. आई नो. पकड़ के थोड़ा सा ऊपर लेकर आना है. लग जा, सिम मोहब्बत से लग जा. थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आपने ट्राई करते रहना है. पहले हम ये लगा लेते हैं, ये लग जाएगा मेरे ख्याल से.
समटाइम अगर आपका जैक ना लगे तो आप थोड़ा सा सांस ले सकते हैं, माइंड को थोड़ा सा फ्रेश करके। ये जब टक की आवाज़ आती है तो इसका मतलब वो लग जाता है। ठीक है, आप प्रेस करते हैं, पहले उसकी पोजीशन पे आराम आराम से 6 सेंस के साथ लाएं। जब आपको लगे कि सेम जगह पर आगे थोड़ा सा प्रेस करें, टक की आवाज़ आती है तो इसका मतलब है लग गया है। अब हम सेम थोड़ा सा इसका एंगल चेंज कर देते हैं 13 प्रो मैक्स में, और इसको हम क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेट है तो हम भी इसको अपने सामने थोड़ा सा स्ट्रेट लाते हैं, और उसके बाद ट्राई करते हैं कि ये लग जाए। प्रेस नहीं करना ज़्यादा, हमेशा वो प्यार से। थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि वो इतनी ख़ास पोजीशन पर नहीं है, और है भी साइज़ में छोटा, तो इजी नहीं होता जब भी आप इसको लगाते हैं। समटाइम ये अगर आ जाए, यस अब लग गया। ओके, ये आप देखें बिल्कुल फिक्स हो चुका है। ये वाला जैक है, फिक्स हो गया बिल्कुल बराबर, नीचे सरफेस के बराबर आ गया। ओके, अब आपने लास्ट में बैटरी का जैक लगाना है, शुरू में नहीं लगाना, क्योंकि क्या होता है कि जब आप ये जैक को हलाल ऐसे ऐसे आपस में ऊपर नीचे करते हैं तो बैटरी लगी होगी तो स्पार्क करेगा क्योंकि करंट होता है। तो हम बैटरी का जैक बाद में लगाते हैं, पहले इसको फिक्स करते हैं इन जैक्स को। ओके, सारे जैक आपने स्लोली फिंगर के साथ चेक करने हैं इस फिंगर, उसके बाद अब आपने बैटरी का, लेकिन कोशिश करनी है ये साथ से, इससे ये और एक हाथ से नीचे, ये 2 फिंगर से, ये 3 फिंगर से फ्रेम पकड़ना है ताकि आपकी एलसीडी पीछे ना गिरे और जैक ना टूट जाए। ओके, अब मैं लगा रहा हूँ बैटरी। अब चूंकि ये बिल्कुल ऐसे ऐसे, तो मैं अपने एंगल में ला रहा हूँ आँखों के सामने, ये टक की आवाज़ आती है तो ये लग जाता है। अब स्लोली इसको बड़े प्यार से नीचे लाना है। ओके, दोनों हाथ फिंगर से। अब मैं जनाब फ़ोन को उठाकर इस हाथ से थंब से इसको प्रेस कर रहा हूँ। अगर ये चल गया, समटाइम ये ऑन नहीं होता, अगर ऑन नहीं हो रहा इसका मतलब है कि इसकी बैटरी ऑलरेडी डेड हो चुकी है। तो हम इसको ट्राई करेंगे बैटरी के ऊपर। इसका जो है वो लाइटनिंग वाला जैक है, आप लगाते हैं। यस, बैटरी नहीं। ओके, ये आप देख रहे हैं रेड, ये बैटरी नहीं हो रही। सम टाइम अगर प्रेस करने पे ये लोगो आ जाए इसका मतलब है स्क्रीन चल गई है। सम टाइम नहीं हो रहा तो इसका मतलब है इसकी बैटरी कम है। तो आपने इसको 1-2-3 मिनट के लिए चार्ज करना है। जब ये ऑन हो जाए तो जैक लगाने से पहले, बल्कि आप जब जैक लगा सकते हैं लेकिन एलसीडी को पुट करने से पहले आपने स्क्रीन चेक करनी है कि वो जैम तो नहीं हो रही, स्टक तो नहीं हो रही, इजीली सब कुछ उसके ऊपर नंबर डायल हो रहे हैं। फिर आपने जो है ना वो ये सारे स्क्रूज वगैरह लगाने हैं, बैटरी को फिक्स कर देना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको रिमूव कर रहे हैं ताकि हम इजीली मेटल की प्लेट्स लगा दें ऊपर। ओके, कोशिश कीजिएगा जब भी आपका फ़ोन, आपने जैक शैक सारे लगा दें, फेस आईडी को टच ना करें और ये कैमरा को टच ना करें, क्योंकि इनके अंदर करंट आ जाता है तो वो डैमेज हो सकती है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इनकी जो दूसरे जैक हैं इनको अपनी ख़ास पोजीशन पे लेकर आ रहा हूँ। ओके, ये मैंने बड़े प्यार से लगाए, सिर्फ रखें ऊपर। ओके, अब मुझे यहाँ पर 3 डायमेंशन वाला स्क्रू ड्राइवर चाहिए। अब मैं स्लोली इनको पकड़ रहा हूँ, बड़े प्यार से आपने इनको प्रेस करना, अदरवाइज़ ये जंप कर जाते हैं फिर गुम हो जाते हैं। ये मैं इसके ऊपर रख के, या सम टाइम ना भी रखें, सिर्फ बड़े प्यार से आपने इसको, इन तीनों को, नीचे फ्रेम को, ऊपर मेटल प्लेट को, स्क्रू को आपस में रखना है और बड़ी प्यार से टाइट करना है, लेकिन फुल टाइट नहीं कर रहा
ताकि दूसरे स्क्रू भी लग जाएंगे, फिर एंड पे मैं सबको इकट्ठा टाइट कर दूँगा। ओके, ये 4 मुँह वाला है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा इसको लगा दूँ, फिर मैं जो है ना वो 4 मुँह वाले के साथ इसको प्रेस कर दूँगा। ओके, अब ये वाला आ गया। ये सारे मैग्नेटिक होते हैं, तो आपने बड़े प्यार से इनको ऐसे स्क्रू ड्राइवर को फिट करना है और लगा देना है। ये वाला भी तकरीबन मुझे 4 मुँह वाला ही है, लेकिन मैं अभी सिर्फ इसको फिट कर रहा हूँ। फेस आईडी से बचकर, कैमरा से बचकर अभी फुल टाइट कर रहा हूँ। जो 3 मुँह वाले हैं उनको 3 मुँह के साथ टाइट कर दिया, ये भी टाइट हो गया। पहले आपने इसको फिट करना है, फिर इसको आपने मूव करना है। ओके, ये 4 मुँह वाले ये 2 हैं। ओके, स्लोली फिट किया आपने। कोशिश करें स्क्रू ड्राइवर भी आपका फेस आईडी इन चीज़ों के साथ टच ना हो, ताकि आपका कोई चीज़ डैमेज ना हो। ओके, बस ये सब्र से आपने काम करना है, कोई प्रेशर नहीं लेना। और यहाँ मुझे 3 मुँह वाले चाहिए। वो आपने देखना है कि इसके अलावा कोई स्क्रू तो नहीं है। ये बड़े प्यार से आपने इसको यहाँ से पकड़ना है, और जैसे किताब खोलते हैं वैसे ही आपने इसको खोल के चेक करना है कि अंदर कोई स्क्रू तो नहीं गिरा हुआ। स्क्रू गिरा हुआ है, आपने बड़े तहम्मुल से निकाल देना है उसको। क्योंकि स्क्रू गिरा हुआ तो वो फिर एलसीडी को डैमेज कर सकता है, तो बड़े एहतियात से आपने देखना है। ओके, अब यहाँ पर एक स्क्रू मिसिंग है, तो हम अपने पास से स्क्रू जो है ना देखते हैं कोई लग जाए। ये 3 मुँह वाला है, तो हम खुद समटाइम स्क्रू नहीं होते, इसमें गिरे होते हैं, तो आप खुद से लगा सकते हैं। ओके, ओके। अब जनाब हम इसको एलसीडी को फिट करने से पहले हम इसको थोड़ा सा चार्ज कर देते हैं। वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दरमियान में जो है ना वो कट ना करूँ चीज़ों को, आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ आए। अगर कोई एक्सपर्ट मेरी वीडियो देख रहा है तो लाज़मी बात है वो थोड़ा सा आगे आगे कर सकता है, क्योंकि उसको उसके मतलब का पार्ट चाहिए होगा इसमें से। लेकिन जो नया है बच्चा, कोई भाई दोस्त, मेरी सिस्टर बहन, तो वो अगर कर रही है तो वो सीख रही है, तो वो फिर डिटेल से वीडियो, मेरी गुजारिश है, मेरी दरख्वास्त है और मेरी राय है, मैं सिर्फ सजेशन देता हूँ, आपको फोर्स नहीं कर सकता। तो आपने डिटेल में वीडियो देखनी है, ताकि आपको मेरा एक एक स्टेप पता चले कि मैं कैसे जो है वो आपको सिखा रहा हूँ। आपके पास स्क्रू ड्राइवर अच्छे होने चाहिए, हमेशा कोशिश करें ऐसे स्क्रू ड्राइवर लें जो ऊपर से थोड़े से मूव होते हैं, इसमें क्वालिटी वाइज होते हैं। आप ये भी देख सकते हैं, इनकी डायमेंशन लिखी होती है, 3 डायमेंशन है, और इनका नंबर और साइज़ एवरीथिंग होता है। ये मेरे पास तकरीबन ये सारा स्क्रू ड्राइवर्स की पूरी एक चीज़ें हैं, जिसमें 4 मुँह वाले भी हैं, स्टार भी हैं, हेक्सा भी हैं।